कोई भी गप्पे रिकॉर्ड नहीं हुई हमारी, अच्छी बात है। लोगों को लगेगा कितना क्रिस्प लेक्चर है, कोई फालतू की बकवास नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ के कहाँ पे हम हैं, कहाँ पे खत्म हो जाएगा, अनदर से like 10 minutes and then we will start with something fresh and so that's why I asked you कि तुम ज्वाइन कर लो, ऐसा कोई बीच से हम नहीं शुरू कर रहे हैं। Cool. So let me just tell you what we have done so far. Okay, so you know कि Keynesian में क्या चलता है। एक सेकेंड। So what we have done अभी is in the last lecture we finished with the ISLM मॉडल, और ISLM मॉडल में पॉलिसी implications हमने कर लिए। ठीक, so what we had was in the simple, so we started with classical, और classical के बाद Keynesian का एटलीस्ट फर्स्ट लेक्चर तो देखा है लोगों ने, है ना। so Keynes का जो भी फर्स्ट लेक्चर भी नहीं तो बिल्डअप लेक्चर तो देखा ही हुआ है। so the idea was that now you're focusing, you're not able to manage the depression that you're finding yourself in, all the economists, और फिर भी तुम उसमें जो पॉलिसी लगाया जा रहा है वो उल्टा ही काम करे जा रही थी, बिकॉज you were not able to look at things in the macro way, which is very looking at extrapolating micro to macro. So what Keynes said that this is like something that is not going, that's not going to work. So उसने फिर he gave the theory in which we started with the basic one, in which there were only two sectors, households and firms. उसके बाद हमने उसमें गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, बट उसमें आइडिया ये था कि ये सब एक्सोजेनसली गिवन है। ठीक है, और इस महा बेसिक मॉडल में सिर्फ इवन द इन्वेस्टमेंट वाज एक्सोजेनसली गिवन, सो वी वर ओनली लुकिंग एट द गुड्स मार्केट। ठीक है, सिर्फ गुड्स मार्केट देख रहे थे, हमें प्रोडक्शन से वैसे भी मतलब नहीं था, क्योंकि केन्स ने कहा कि एएस जो है वो फ्लैट है, especially because he was working at a time when it was a depression वाला time, so there was a lot of excess capacity, output जो था वो full employment level से काफी नीचे ही था, है ना। तो then the idea was that in this scenario you can think कि सिर्फ गुड्स मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एंड इन द सिंपलेस्ट मॉडल व्हाट कीन्स सेड कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो भी सिर्फ एनिमल स्पिरिट से डिटरमिन होती है ना। तो इसीलिए उसको भी एक्सोजेनसली डिटरमिन मान लिया, गवर्नमेंट सेक्टर को भी और एक्सपोर्ट्स को भी, एंड देन वी वर ओनली लुकिंग एट द गुड्स मार्केट इन विच वी सेड के आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट विल बेसिकली बी अ रिस्पॉन्स टू एंड अ डिमांड सप्लाई मिसमैच, है ना। तो ये बैक एंड फोर्थ होते होते ये जो फीडबैक है, डिमांड ज्यादा है तो आउटपुट मैच होगा, आउटपुट मैच होगा तो इनकम बढ़ेगी लोगों की, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फिर बढ़ेगी, फिर वो डिमांड बढ़ के फिर आउटपुट बढ़ेगा, फिर आउटपुट से फिर इनकम, फिर इनकम से फिर डिमांड। सो देन अल्टीमेटली यू कम टू अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड आउटपुट मैच बिकॉज ऑफ सी बीइंग लेस देन 1, है ना। ये हमने लास्ट टाइम किया था, अगर सी लेस देन 1 नहीं है तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, every time your income increases your consumption increases by an amount lesser than the increase in income. तो इस तरीके से सिस्टम स्टेबल था। अब हमने सिर्फ यही वाली बात की थी, सिर्फ गुड्स मार्केट, बट देन वी इन द नेक्स्ट स्टेप वेयर द मॉडल वाज इम्प्रूव्ड अपॉन, वो है ISLM मॉडल, जहां पे फिर और भी जो मनी मार्केट और लोनेबल फंड्स मार्केट, इन मार्केट्स को भी इंटीग्रेट किया गया। The idea was that हमको इंटरेस्ट रेट से भी मतलब है, और बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट का सारा कंपोनेंट एक्सोजेनस नहीं है, कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक पार्ट है इन्वेस्टमेंट में भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट इंटरेस्ट रेट है। ठीक, सो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रेट एक रोल प्ले करता है। दूसरा रीजन ये था कि कीन्स को दिखा कि भाई मनी डिमांड भी इंपॉर्टेंट है ना, और मनी जो क्लासिकल्स के हिसाब से मनी डिमांड जो था या मनी वाला जो मार्केट था वो बिल्कुल ही कट ऑफ था, है ना, द क्लासिकल डाइकोटमी। सो द मनी मार्केट वाज लाइक कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम व्हाटएवर वाज हैपनिंग इन देयर विद द रियल वर्ल्ड। जो भी हो रहा है वो प्राइस इंक्रीज में जा रहा है, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट एंड मनी डिमांड वाज आल्सो कट ऑफ फ्रॉम द लोनेबल फंड्स मार्केट। देख रहे हो, सो इन द क्लासिकल सिस्टम ये तीन मार्केट्स एकदम ही अपना अपना काम करती थी। ये मतलब जो ये वेरिएबल जोड़ने वाले थे ये नहीं थे इनमें, मनी डिमांड और लोनेबल फंड्स का डिमांड सप्लाई, इनको जोड़ने के लिए भी इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो इन लोग ने अज्यूम किया क्लासिकल्स ने कि इंटरेस्ट रेट जो है वो मनी डिमांड को अफेक्ट नहीं करता है, ऊपर ऊपर बातें कर रहे थे बट दे डिड नॉट फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड, एंड दैट इज व्हाई द मनी मार्केट वाज डिफरेंट।
राइट? सो यू हैड योर लोनेबल फंड्स मार्केट, वहां पे कुछ चल रहा है, वहां पे इंटरेस्ट रेट अपना ऊपर नीचे होकर चीजें सुलटा दे रहा है, वो चीज लीक नहीं हो रही है इन योर एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड में जो लीक हो भी रहा है वो प्राइस ऊपर नीचे करके सुलटा दे रहा है. सो बट नाउ कीन सेड कि नहीं, मनी डिमांड और बॉन्ड्स का डिमांड आर रिलेटेड, एंड इन एनी गिवन टाइम पीपल इधर डिसाइड कि या तो वो कैश होल्ड करेंगे या फिर वो बॉन्ड्स होल्ड करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप if you look at equilibrium in any one market, you're essentially looking at equilibrium in the other market also. क्योंकि जो डिमांड मनी का है, राइट, वो जो डिमांड मनी का है और जो सप्लाई मनी का है, if your total is the same, equilibrium here would mean that the bonds market is also in equilibrium. अगर लोग अपने मनी डिमांड से, मनी सप्लाई से, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम से खुश हैं, तो वो बॉन्ड मार्केट इक्विलिब्रियम से भी खुश होंगे ही बाय इम्प्लीकेशन. ठीक है? सो एनीवेज, दिस आई एक्सप्लेन्ड इन डिटेल व्हेन आई टॉक्ड अबाउट इट. द आइडिया वाज कि मनी, फिर हम इंटरेस्ट रेट से लेकर वी कैन लिंक द movements in the money market, right, where the demand for money has to match the supply of money, right, to movements in the actual goods market. तो तब हमने ये कहा कि अगर जो है मनी मार्केट में कोई भी मूवमेंट होती है ना, सो अगर मान लो कि मनी डिमांड, दिस इज if for some reason the money demand exceeds money supply, right, so इसका इफेक्ट ये होगा कि इस मार्केट में इक्विलिब्रियम वापस लाने के लिए, so what we have is that money supply is exogenously determined by the central bank. ठीक है? सो जब मनी सप्लाई फिक्स है और डिमांड जो है वो बढ़ गई, तो उस बढ़ी हुई डिमांड को वापस लाने के लिए मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ना पड़ेगा, right? Because then your bonds will become more attractive and people will start demanding bonds. Their money demand will go down and match the already given money supply. है ना? ये 1200 हो गई, अगर ये 1000 पे रह गया था, तो ये 200 से इसको नीचे आना पड़ेगा, और इसको नीचे आने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ना पड़ेगा. सो द इंटरेस्ट रेट राइजेस. बट ये इंटरेस्ट रेट मनी मार्केट और गुड्स मार्केट को रिलेट करता है. सो व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस, by the assumption, by the way we have talked about investment, इंटरेस्ट रेट मतलब इन्वेस्टमेंट उधार लेके किया जाता है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट उतना मुश्किल इन्वेस्टमेंट या उतना लेस प्रॉफिटेबल. सो देन इन्वेस्टमेंट गोज डाउन एंड देन वी हैव द यूजुअल साइकिल वेयर इन्वेस्टमेंट गोज डाउन तो एडी गोज डाउन तो वाई गोज डाउन. सो बिकॉज ऑफ दिस the money market and the goods market are related. ठीक? सो ये हमने एनालिसिस मोटा मोटा यही है. अब तुम इसमें जिस मार्केट में डिस्टर्बेंस इंट्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से एडजस्टमेंट होगा. सो इफ यू इंट्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन द मनी मार्केट एज अ पॉलिसी मेकर, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अफेक्ट द मनी सप्लाई. तो मनी सप्लाई जब अफेक्ट होता है तो फिर से ये मिसमैच होगा, चाहे ग्रेटर होगा चाहे लेस होगा. बेसिकली डिमांड अनइक्वल टू सप्लाई हो जाएगा. फिर से कोई मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट होगा, और फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू यू विल सी चेंजेस इन दी गुड्स मार्केट, राइट, चेंजेस इन एक्चुअल बाय. बेसिक फंडा यही है. दूसरा क्या तरीका है कि तुम डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड को ही अफेक्ट कर दो, राइट. सो जब तुम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हो, राइट, या फिर तुम इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे देते हो, सो यू अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड. अब यहाँ से क्या लिंक होता है? जब एग्रीगेट डिमांड सपोज इंक्रीज होता है, let's talk about in this market. So your aggregate demand increases. This increases your Y, of course, equilibrium Y. अब ये equilibrium Y एक और चीज को अफेक्ट करती है, वो है मनी डिमांड. जितना लोगों के पास पैसा होगा उतना वो खर्चा करने के लिए पैसा मांगेंगे. जितनी इनकम होगी, जितनी इनकम उतना खर्चा, एटलीस्ट एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप तो होगा. सो मनी डिमांड इंक्रीजेस, और फिर यहाँ पे मनी मार्केट में भी डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है ना. और फिर इस डिसइक्विलिब्रियम की वजह से एक इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, इंक्रीज होगा इस केस में, और फिर वापस यहाँ से लिंक होगा इन्वेस्टमेंट. सो इस टाइप का साइकिल चलता है, राइट. सो what kind of disturbance you introduce via your policy then depends कि कौन से मार्केट में एडजस्टमेंट हो रहा है, और उसका लिंक हमेशा ही इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के थ्रू होगा, राइट. एंड देन द डिग्री ऑफ चेंजेस दैट यू कैन इंट्रोड्यूस और डिग्री ऑफ change in this, for example, if you do a change in this market, then by how much you will be able to affect the goods market depends on कि ये कितना ऊपर नीचे हुआ
और इसके रिस्पॉन्स में ये कितना ऊपर नीचे हुआ, इसके रिस्पॉन्स में ये कितना ऊपर नीचे हुआ, ये दो लिंक्स हैं. तो this is via what is called H, interest and sensitivity of money demand. This is what is called B, interest sensitivity of investment demand. Right? So जब तुम lectures देखोगे तब you will understand, if you've seen it, Rajni has seen it, she will understand. This is what we had. So इस तरीके से डिपेंड करता है IES और LM के स्लोप्स पे कि किस पॉलिसी का कितना इफेक्ट होने वाला है. All right, this is what we did. The only thing that I said कि कल जो रह गया था वो ये था कि crowding out. So this is called accommodating monetary policy, right? So what we did was that if you increase government expenditure, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत crowding out होता है ना. वो भी दो reasons पे डिपेंड करेगा as we discuss. crowding out कितना interest rate change होता है और कितना investment change होता है उस interest rate के response में, right? So कहीं ना कहीं crowding out होगा. If you want कि crowding out बिल्कुल ही ना हो, for that sometimes you may want that, right? Sometimes you may want कि government का भी खर्चा, मतलब डिमांड बढ़े government के साइड से, but लोगों का private investment crowd out ना हो, right? Then you talk about what we called accommodating or accommodate, rather ऐसे लिखो. So fiscal policy, you use this fiscal policy accommodated by monetary policy. Right? इसको बोलते हैं, this is also called monetizing budget deficit. Right? So in the ISLM framework, this looks like that अगर ये IS है और ये LM है, ठीक है ना. सो तुम क्या करते हो, तुम पहले एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाते हो, राइट? थोड़ा भी बेसिक ISLM याद होगा तो ये याद ही होगा तुम लोगों को. सो इफ यू सपोज डू एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, देन व्हाट हैपेंस यूजुअली इज कि यहाँ से आउटपुट यहाँ बढ़ जाता है ना. यहाँ तक बढ़ सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ राइज इन इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो जाता है, राइट? सो देन योर आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम हियर टू हियर. बट नाउ the other thing that you can do is when you increase government expenditure, you also increase money supply. Then your LM also shifts. So when you increase the money supply, you arrest the rise in interest rate. Right? So what happened was, यहाँ से यहाँ जब तुमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो लोगों का मनी डिमांड बढ़ गया. मनी डिमांड को करेक्ट करने के लिए मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आने लगा. अब ये अपवर्ड प्रेशर आएगा तो इन्वेस्टमेंट गिरेगी, क्राउडिंग आउट होगा, राइट? इस अपवर्ड प्रेशर को रोकने के लिए तुम लोगों को ज्यादा पैसे मांग रहे हैं ना, दे दो पैसे, राइट? व्हेन यू गिव देम द मनी तो इंटरेस्ट रेट को उतने की जरूरत ही नहीं है, मनी मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. So you will have extra demand coming from the government, but interest rate not responding to it, and therefore you will land up here. New IS, new LM, Y3. Okay, this is sometimes done. जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही फुली इफेक्टिव हो जाए. हो सकता है थोड़ा सा कम मॉनेटरी एडजस्टमेंट हो, बट जो भी है इतना ज्यादा क्राउडिंग आउट नहीं होगा, इसके बीच में ही होगा. Alright, this is called monetizing budget deficit. We will do more about this जब हम international economics करेंगे, वहाँ पे काफी हम इसके बारे में, because we will also have the foreign exchange reserve with us. So then we will talk more about this. But this is what means when we say that you monetize the government deficit. मोटा मोटा है ना. In practicality there are a lot of other things, but basically तुम अपना खर्चा बढ़ा रहे हो और तुम उस खर्चे को कैसे फाइनेंस कर रहे हो, पैसे प्रिंट करके. Not saying anything about the usefulness of this policy. Just stating that this is what it means. Okay. All right. So one final point, what you will have observed
or what you will observe once you look at the lectures is that basically monetary policy जो है that targets interest sensitivity components of aggregate demand, right? Targets or rather operates by stimulating, right? So you can say that it operates stimulating the interest sensitive components of AD, है ना? And usually this is the investment demand. With fiscal policy, you have much more, you can be, you have much more discretion कि तुम कौन सा aggregate demand का component target करना चाहते हो, right? So you can specifically target investment, मान लो एक investment subsidy दे दी. You can specifically target consumption expenditure, right? Tax break दिया. अगर तुमने income tax break दिया तो तुमने household consumption expenditure को boost दिया. But अगर तुमने corporate tax break दिया तो corporate tax break से usually the expectation is that it will improve investment. और इसके ऊपर जो assumption रहता है वो ये होता है कि corporates जो हैं वो अपना saving को reinvest करते हैं, right? Working on this assumption, if you want to target suppose investment, if you want to stimulate investment, तो tax break भी ऐसा नहीं है कि what we said कि T घटा दो is fine अगर हम simplistic analysis कर रहे हैं, but in the real world reducing T depends on कि किस sector का T तुमने remove किया है ना? Sometimes government will reduce T on the taxes, right? On some sectors that it wants to promote, जैसे कि EV पे, ठीक? जैसे कि क्या नाम है renewable energy के production पे, right? So then much more targeted, all right? You can also increase transfers. तो जब transfers increase करोगे फिर से तुम consumption spending को target कर रहे हो. Or you can directly increase, government expenditure on buying some goods. So if you're buying agriculture products, you're stimulating that. If you're buying defense goods, defense equipments, defense पे खर्चा कर रहे हो, वो एक अलग type of stimulation है. So fiscal policy has much more discretion in which component it wants to target. Monetary policy usually जो है investment को ही target, मतलब it's indirect, like it stimulates demand indirectly via a disbalance in the money market. ठीक? So वो भी इतना भी blunt नहीं है, but compared to fiscal policy you can think that mainly उसका modus operandi वही है. Alright? So ये ऐसा हम एक वो बना सकते हैं just for your reference that this is the policy and this is the effect on equilibrium income and equilibrium interest rate. So if you have fiscal policy, right, so your equilibrium income definitely goes up, but interest rate also goes up. Okay? And if you have monetary policy, income goes up, but interest rate goes down. Okay? So sometimes you may want a policy जिसमें कि मेरा interest income तो बढ़े but interest rate ना बढ़े, then monetary policy could be the way to go. Usually government will apply a mix of policies. सिर्फ एक policy targeting कभी नहीं होती है एक time पे, है ना? It's much more complicated of course, but anytime there's a mix of policy, that is, if you have a specific problem, तो एक policy mix response होता है उसका. Alright. So this is it about your ISLM model. So far जहाँ पे हमने policy वो भी कर लिया, policy effects भी कर लिए. अब आगे चलते हैं, ठीक है? Any questions? There can be when you look at all the lectures, but अभी के लिए I'll just ask Rajni. All good?
ओके, ठीक। So now we are going to augment the analysis in the last table that you drew right now. हाँ बोलो क्या हुआ उसमें? उसमें एक चीज जो मेरे को ठीक से लिखनी चाहिए थी वो थी एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड both of them are expansionary, right? Assuming that they are expansionary. ये सवाल था या कोई और डाउट है? प्लस माइनस मतलब डायरेक्शन ऑफ चेंज. सो इफ योर जी इंक्रीजेस या फिर टी फॉल्स, है ना. एक्सपेंशनरी फिस्कल का मतलब ये है या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा या टैक्स फॉल होगा. इस केस में रिस्पॉन्स ये होगा कि आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा. Similarly, if you have in expansionary monetary policy, इक्विलिब्रियम आउटपुट इंक्रीज होगा और इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, राइट. मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो. कूल, ग्रेट. सो नाउ अब हम बात करेंगे लेबर मार्केट की. अभी तक हमने लेबर मार्केट को ब्लैक बॉक्स में रखा हुआ था, चर्चा ही नहीं कर रहे थे हम. और उसका रीजन ये था, एक सेकेंड, इफ यू आई कैन ओनली सी कपल ऑफ यू. तरुण इज ऑल्सो यूर. आज तो भाई क्या बात है. हाय तरुण. सो इफ यू गाइज रेज योर हैंड एंड आई एम नॉट एबल टू सी इट क्योंकि वो स्क्रीन के बाहर है, तो मेरे को ऐसा मतलब जस्ट पुट इट ऑन द चैट बॉक्स, ठीक है. हाँ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम अभी तक लेबर मार्केट को क्यों ब्लैक बॉक्स में रख रहे थे, क्यों हम लोगों ने उसको इग्नोर किया हुआ था. द रीजन वाज ऑफ द अजम्पशन ऑफ शॉर्ट रन, द अजम्पशन के प्राइसेस कांस्टेंट है. सो हमने क्या कहा कि आउट गुड्स मार्केट में प्राइसेस कांस्टेंट है. रिमेंबर, कोई भी एक्सिस पे प्राइस राइज नहीं था. हमने कोई एग्रीगेट डिमांड को एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस नहीं बनाया था, है ना. हमने एग्रीगेट डिमांड को एज अ फंक्शन ऑफ इनकम बनाया हुआ था. देयर वाज नो टॉक ऑफ प्राइस, राइट. सो वी अज्यूम्ड दिस वाज योर एडी, राइट. यहाँ पे एडी था. एडी वाज अ फंक्शन ऑफ वाई. जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा एडी, ऐसा था. प्राइस की कोई बात नहीं थी. प्राइस की कोई बात नहीं थी. ऐसा नहीं कहा था कि एडी और प्राइस का कोई रिलेशनशिप है. एंड देयरफॉर दैट implied that there is a fixed price in the output market, and if the demand increases, that demand is not going to affect the price level in the output market. गुड्स मार्केट या आउटपुट मार्केट जिसको हम बोलते हैं, तीन मार्केट्स हो गई. सो यू हैड योर गुड्स मार्केट, मनी मार्केट, एक्चुअली चार मार्केट्स हो गई, बॉन्ड्स मार्केट एंड लेबर मार्केट, है ना. अभी तक हमने बिल्कुल ही बेसिक केनीजियन मॉडल सिर्फ गुड्स मार्केट पे फोकस करता है, राइट. यू गो टू ISLM मॉडल, यू आर टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट एंड बॉन्ड्स मार्केट एज वेल, बट इन दोनों को मिला के एक ही एनालिसिस में इंक्लूड कर लिया जाता है. सो इन द ISLM मॉडल यू हैव गुड्स मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट, बट यू स्टिल डोंट टॉक अबाउट द लेबर मार्केट. अजम्पशन है कि गुड्स मार्केट में इतनी अंडर कैपेसिटी है, मतलब या प्रोडक्शन में इतनी अंडर कैपेसिटी पे प्रोडक्शन हो रहा है. प्राइसेस बढ़ाओ, सॉरी प्राइसेस उतना ही रहेंगे, डिमांड बढ़ती भी है तो भी प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर नहीं आएगा गुड्स मार्केट में. और जब प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर नहीं आएगा और जब आउटपुट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के नीचे है, राइट. सो देन यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स. तो जब तुमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तुम इस अनएम्प्लॉयड पूल में से टैप करोगे और अपना प्रोडक्शन बढ़ा लोगे. तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज नहीं होगा, राइट.
एंड लाइक पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा, एमसी इंक्रीज नहीं होगा, और तुम्हें वैसे भी आउटपुट में का प्राइस सेम मिल रहा था पी बार में। ठीक, अब हम कहेंगे कि नहीं, अब जो है वी विल ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट दैट एक टाइम तक ही चलेगा ये, है ना। एक टाइम आएगा जब इंक्रीज इन डिमांड विल पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेस इन द गुड्स मार्केट, राइट। देन यू विल वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन मच मोर। एक टाइम आएगा जब लेबर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी कम भी नहीं होगी, है ना। तो तब जो है प्राइसेस पे भी अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा, वेजेस पे भी अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा, एंड देन वी विल हैव टू एक्सप्लिसिटली टॉक अबाउट द लेबर मार्केट, and that is what we are going to do. So essentially we are going to move from the short run to the medium run. ठीक है, अब ये जो medium run है, this is the terminology, यूजुअली मीडियम रन नहीं यूज करते हैं हम, शॉर्ट रन लॉन्ग रन ही कर रहे हैं, माइक्रो में जब से कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं करते हैं फ्रॉइड वगैरह में भी, बट मीडियम रन इज अ टर्मिनोलॉजी यूज बाय ब्लैंचर्ड, एंड आई लाइक इट बिकॉज व्हाट ही सेज इज शॉर्ट रन में प्राइसेस आर फिक्स्ड, प्राइसेस फिक्स्ड तो वेजेस भी फिक्स्ड। मीडियम रन में प्राइसेस आर वेरिएबल, राइट, प्राइसेस मूव होते हैं मीडियम रन में, प्राइसेस एडजस्ट करते हैं, बट मीडियम रन में क्या नहीं एडजस्ट करता है, वो है कैपिटल स्टॉक, वो है टेक्नोलॉजी। ठीक, सो मीडियम रन की जब हम बात करते हैं तो हम, जैसे हम माइक्रो में जब शॉर्ट रन की बात करते थे, माइक्रो में हम क्या कहते थे कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन कितना लेबर एम्प्लॉय हुआ है, the only variable क्या नाम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर इन द शॉर्ट रन। वो अब यहाँ पर मीडियम रन, क्योंकि शॉर्ट रन में हम बिल्कुल ही प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर रहे हैं। सो मीडियम रन इज वेयर के, so you have L is variable, K and technology is fixed, right? And then you have long run, और लॉन्ग रन जो है वहां पे के और टेक्नोलॉजी भी मूव होते हैं। सो इन द लॉन्ग रन नाउ, जो मैक्रो एनालिसिस ब्लैंचर्ड करते हैं अपने बुक में, लॉन्ग रन इज वेयर ही टॉक्स अबाउट कि अब हम गिवन रिसोर्सेज के साथ, गिवन कैपिटल स्टॉक, गिवन टेक्नोलॉजी के साथ हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच गए हैं, बट अब हमें बात करनी है ग्रोथ की। ठीक, जहां पे तुम्हारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, जहां पे तुम्हारा कैपिटल का स्टॉक बढ़े, राइट। सो योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इटसेल्फ इंक्रीजेस, वाई स्टार ही जब मूव हो जाए, वो बात करते हैं हम लॉन्ग रन में, राइट। सो योर के एंड टेक आर वेरिएबल, and we are basically talking about growth economics, right. So what he does is, within the same book he talks about short run, he talks about medium run, and he also talks about जो हम growth में करते हैं, growth and development वाले theories, he also incorporates here. So obviously it is very sensible, and this is why I like medium run वाला, but हाँ हमको differentiate करना पड़ता है due to various reasons, वो अलग बात है। So now this is where we are going to go, medium run, ठीक है। We have that your labor will be variable, है ना, इनपुट मतलब एम्प्लॉयमेंट, और ये चीजें फिक्स रहेंगी, राइट, एंड योर प्राइस विल बी वेरिएबल, सो एल वेरिएबल एज वेल एज योर पी वेरिएबल। Both these are important. Okay, so now let us start with some definitions. ब्लैंचर्ड में शुरू के 2 सेक्शंस जो हैं वो इस टाइप के डिस्कशन पे है, चैप्टर नंबर 8 that I will share with you, 8 या 7, right? But while it's a good discussion, it's a good discussion for American students. It's a, you know, it's of limited use for Indian students. I tried कि मैं, I did not try. I wanted to try कि मैं Indian context में वो सारे numbers और trends का एक compilation बनाऊं. I did not get the time, so I'm sorry about that.
आई ट्राई टू डू दैट, बट एनीवेज इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे तो वो करोगे ही, तो इसलिए मैंने थोड़ा आई saved my time. So when you read that, you will read it from the point of view of looking at the terms that I talk about here. अमेरिकन इकोनॉमी में जो है, बुक भी आज की तो नहीं है, बुक तो 10 साल पुरानी है, तो 10 साल पहले क्या ट्रेंड्स थे और कितना एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कैसा फ्लो था, उससे हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तो वो सब कुछ रहा ही नहीं है, अब तो आज न्यूज कुछ और कल न्यूज कुछ आती है। 2 days I did not get the time to open the newspaper. I opened it today and I was shocked कि मतलब कब हो गया ये सब, कब कब हो गया, what is happening? It's just I was literally shocked that अभी तो पढ़ा था मैंने, मुझे लगा 1-2 दिन नहीं पढ़ूंगी तो क्या ही हो जाएगा, underestimated. So yeah, so now things are just, I don't know, पहले सिर्फ इंटरनेट फास्ट चलता था, अब अब रियल वर्ल्ड भी फास्ट चल रहा है। अरे ट्रम्प तो बहुत दूर है, हमारे आस पड़ोस में ही इतना बवाल हो रहा है, क्या बताएं। So you will only read it from the point of view of the definition. You will also not pay a lot of attention to the exact formula of the definition, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कई बार अलग डिफाइन करते हैं, कई बार हम पॉलिसी और न्यूज़ कन्वीनियंस के लिए भी डेफिनेशंस चेंज कर देते हैं। सो दैट्स अनदर थिंग वी नीड टू स्टे अब्रेस्ट विथ, बट मोटा मोटा हम समझ जाएंगे क्या करना है, बहुत ज़्यादा मतलब निट्टी ग्रिटीज में घुसने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो द फर्स्ट thing what we need to understand is what is the labor force, right? So labor force का definition ये है कि it is the sum, it's the aggregation of total number of people who are either working or who are looking for work. ठीक है, so labor force involves people who are actually employed, also includes people who are currently unemployed but looking for work. ठीक है, so this is one important term, people who are either employed, either working, or they are looking for work. Looking for work is, actively looking for work is important. Only then it will be included, you will be included in the labor force. Labor market is part of neo-Keynesian or neo-classical. लेबर मार्केट जो है ना, वो तब है जब हम नियो किनेशियन और नियो क्लासिकल का सिंथेसिस करते हैं। सो दिस इज वेयर, सो दिस, ये सारा जो बिल्डअप हो रहा है, ये बिल्डअप हो रहा है एएसएडी मॉडल के लिए, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड मॉडल के लिए। ठीक, अब हम जब हम एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो डेफिनेटली द प्राइस इज वेरिएबल। सो एग्रीगेट डिमांड में जब तुम प्राइस का वेरिएबिलिटी लाओगे तो फिर तुम मीडियम रन में आ गए। एग्रीगेट सप्लाई में भी जब तुम अपवर्ड स्लोपिंग बनाओगे, क्योंकि क्लासिकल का था वर्टिकल, राइट, but AD में it will be upward sloping, so it will respond to prices, right? So then you will have inclusion of this labor market. So it's what is called a neo-Keynesian, it's called a neo-classical Keynesian synthesis. ये दोनों के कह लो अच्छे गुण हैं इस मॉडल में। Not it's not exactly Keynesian or not strictly neo-Keynesian because prices are flexible. It's not strictly classical or neoclassical because AS is not vertical. ठीक, labor force हो गया. The second thing is out of labor force, right? So out of labor force is when you are not working and not looking also. Of course, both of them will exclude. So let's say that both these definitions are going to exclude people who are not eligible to work, right? So exclude underage kids, right? Whatever is the law of your country, if the kids do work, then you don't include them in the data. It will also include people who are, in jails, people who are convicts, right? And I'm not sure, I haven't checked it,
It also usually excludes people who are in the armed forces, but armed forces have always been a way to generate employment, even more so in India right now. अग्निवीर वगैरह एक employment generation program की तरह भी सेल किया जाता है. So I'm not sure this government may have included them as part of the labor force and therefore increase the employment rate. I will check it. Not sure. So I'm not including them here, but definitely underage kids and convicts are not part of either of these definitions. So इनको हटा के जो लोग बचते हैं उनको या तो लेबर फोर्स में असाइन किया जाता है या आउट ऑफ लेबर फोर्स असाइन किया जाता है. ठीक है. इट ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड पीपल इन जे डू लेबर लाइक मेकिंग स्मॉल कैंडिडेट. यस, नॉट एडेड. वो लेबर फोर्स नहीं है ना. ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड फ्री लेबर दैट women provide or any caretaker provides at home. So as usual जो जीडीपी के शॉर्टकमिंग्स हैं, जो ये सारे मेट्रिक्स के मार्केट बेस्ड मेट्रिक्स के शॉर्टकमिंग्स हैं, वो इसके भी हैं. Women working for free, anyone working for free, not included. All right. Then we have participation rate. So participation, we will call this. चलो ठीक है, I'll get to that number. So participation rate क्या है? Participation rate is the ratio of people in the labor force upon the people available for work. Right? So basically labor force divided by labor force plus out of labor force people. जो लोग available for work, मतलब ये इसमें ये बच्चों को include नहीं करेंगे, है ना. ये बच्चे और ये convicts हटा के whoever is available for work, we will talk about them like labor force as a ratio of that, right? So usually we have seen that ये जो labor force participation rate है, यही इसका ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, a term that you may have heard a lot in recent times. Usual trend is कि all over the world the LFPR has been going up mainly due to increasing retired from jobs. Again differs के कौन से country में कैसा है, but the idea is that even retired people sometimes do things, right? So not strictly considered out of the labor force. Sometimes they may be, sometimes they may not be, और context dependent भी रहता है. ये कई हमेशा जब ऐसे मेट्रिक देखोगे उसमें हमेशा कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड होगा कि ये particularly किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, whether the retired people above 65 are in the force or they are not. है ना. मान लो कि कोई बहुत बुढ़ा है बट वो रिक्शा चला रहा है या कहीं ऐसा एज अ प्यून एम्प्लॉयड है, राइट, इन अ प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे नहीं रिटायर्ड है, तो काम तो कर रहा है ना. लाइक सो सपोज देयर इज अ वुमन हु इज एंगेज्ड इन सम केयर टेकिंग वर्क किसी घर में जहाँ पे उसको सैलरी मिलती है, तो इंक्लूडेड, राइट. हाँ, so labor force participation rate usually has been going up all over the world because of labor. No, it is wrong. It is wrong. Not the total population. Total population available for work. Total population में बहुत सारे लोग हैं. Total population में obviously बच्चे भी हैं, convicts भी हैं, और भी कुछ लोगों को, suppose you don't want to include people who are either mentally or physically disabled. कई बार ऐसे भी तुम बना देते हो. बट अगर तुम सबको भी इंक्लूड करोगे तब भी टोटल पॉपुलेशन की बात हम नहीं कर रहे. People available for work or eligible to work, whichever way you want to put it. Cool. Right. Now what I was saying is कि labor force participation rate जो है वो usually historically has been going up in the recent years. Why is that? Why do you think is that? No, it is usually because of the increasing participation of women in formal labor markets, right? Labor markets में women जो कि earlier they were not working for wages, over the years
1950s, 60s, 70s, the labor force participation rate, especially in the developed countries, was going up, 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 and also considered a metric for, development or a goal that is desirable in itself, right? So you give, when the women also participate in the labor market, they have the agency increases, agency in decision making increases. है ना? So इसके ऊपर बहुत research है. It's a proven thing. But the thing where India comes in is that India का labor force participation rate has been pretty stagnant for a very long period of time. At the same time, जब India के the women, the education rate, the enrollment rate, the performance, the enrollment in various kinds of degrees, जो भी metric लगा लो, women have been doing better and better and better. A lot of times their enrollments and their results have also been better than men in that particular field. या जैसे भी there has been like steady improvement in outcomes, in educational outcomes for women, but that is just not being translated into labor market outcomes for women. So this puzzler है नहीं, हम सबको पता है क्या reason है, but this puzzle sort of, it's a puzzle to the Western countries. So that's what they are thinking कि ये stagnation is something that needs to be targeted. So usually that is what is happening, that you do get into the job, but first line of argument is that हाँ पढ़ाना सबको चाहिए, लेकिन इतना पढ़ लो कि शादी अच्छी जगह हो जाए. And even if you are working at a good place, when you get married, eventually, like a vast majority of women drop out of the labor force either after the marriage or after childbirth. तो ये बहुत ही common है इंडिया में, और इस वजह से this is the kind of thing that we observe, that even though the educational outcomes have been going up, have been improving steadily, labor force participation rate in India and women labor force participation rate in India is pretty stuck. It's very it's at the same rate for a very long period of time. Okay? So that is your labor force participation rate. The next is the unemployment rate. So unemployment rate ka definition hai that the number of employed people, right? So ratio of employed government schemes. What kind of government schemes? मतलब reason for what? Yeah. मुद्रा लोन क्यों इसके लिए होगा? मतलब are you saying that it is working in favor of increasing LFPR या decreasing? हाँ, it works in increasing, definitely. है ना? मुद्रा लोन तो फिर भी एक बहुत डायरेक्ट चीज हो गई. Another thing that can increase labor force participation is when you transfer money directly into the accounts of women. Right? This is very basic thing, but इससे ये होता है कि वो पैसे जब उनके हो जाते हैं ना, तो कई बार उस पैसे से they do a lot of things, which is mostly in the self-employment zone, but they do get like they do start earning their own money. So yes, there are a lot of in fact, ऐसे सोच के देखो कि educational outcomes भी बहुत improve हुए हैं. That is also very good. It's just not getting converted. It'll take time. I'm not saying that it won't, but even that first step was very important. है ना? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, I would say that at least ideologically, and that is what matters in the long run, ideologically it has been a very good success. है ना? अभी कोई ये नहीं बोलता कि बेटी को पढ़ाएंगे नहीं. I mean, lesser people say it. It's that हाँ पढ़ाएंगे बिल्कुल, जो जितना पढ़ना है पढ़ो, शादी हमारी मर्जी से करो. बट पहले ये भी नहीं था ना, पहले था कि तुम पढ़ना ही नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट है. You can look at it like that, right? बेटे को क्या हो रहा है अंशुल? कौन तुम्हारा बेटा मार रहा है? ओके, सो don't get me started on this argument, okay? Okay, so now what
may be a fallacy is that if you observe a high unemployment rate, high की जगह हम ये नहीं कह रहे कि 12-13%, but suppose you observe 5-6-7% unemployment rate, it can signal, it can actually be true in two cases. A very high unemployment rate could be because you have a very active labor market, right? So you have a lot of um, बस करो वापस आओ हाँ so you have a very active labor market where basically there are a lot of like it's a very flexible labor market, right? कर लो तुम लोग कर लो फिर चलेंगे आगे 1 घंटा हो गया ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं तब तक तुम लोग डिस्कस करो I'll get a glass of water then we will continue. All right, चलो remind me to restart the recording please. All right. Huh. So what I was saying was that if you observe a high unemployment rate, it could mean that it could be true in both cases. One, it could be true that you have a very fluid or well-functioning labor market, right? So you have high separations and hirings, right? And in that case, whoever gets, people are constantly leaving their existing job for a better job, right? Or, if a firm doesn't want a worker, doesn't see that a worker is not performing, तो उसको निकाल सकते हैं लेकिन इस वर्कर को दोबारा जॉब भी मिल जाएगी आसानी से, है ना? तो इस टाइप के एक एक there's a lot of movement in the labor market, right? This will also be true, राइट? अगर हाई अनएम्प्लॉयमेंट तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इट्स वेरी स्टैग्नेंट, राइट? सो यू हैव अ वेरी स्टैग्नेंट लेबर मार्केट वेयर इफ यू आर अनएम्प्लॉयड तो फिर तुम्हें मतलब यू आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ जॉब, राइट? सो इट कुड ऑल्सो बी दैट you have a stagnant unemployment pool. So whenever you see an unemployment number, you have to always supplement it with information about the kind of mobility that there is in the labor market. ठीक है? उसके बाद other terms are जैसे quits है. Quits is that when the worker leaves the job for maybe hopefully a better opportunity or for whatever reason. और layoffs वो है जब it's basically reflective of how things move across firms, how employment levels change across firms. तो quits और layoffs में ये फर्क है. I'm not writing it over here. Then there's something called duration of unemployment. Duration of unemployment is the average length of time for which an unemployed person, usually stays unemployed. Right? So जितना ज़्यादा duration of unemployment होगा उतना ज़्यादा stagnation रहेगा labor market में. ठीक? Another term is what is called discouraged workers. Now, discouraged workers are a sort of murky category where these people are basically who are not actually or actively looking for a job, but if they get one, they'll take it. Right? So, actually, जो भी employment या फिर ये जो measures होते हैं, these are based on surveys and these surveys are based on self-reporting. तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेल्फ रिपोर्टिंग और थोड़ा बहुत मतलब बेस्ड ऑन द सर्वे क्वेश्चनर आल्सो जैसे एनएसएस आस्क्स के तुमने लाइक व्हाट हैज बीन योर प्राइमरी एक्टिविटी स्टेटस और यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस मंथली एक्टिविटी स्टेटस करके उन्होंने बहुत सारे मेट्रिक बनाए हुए हैं जिसमें कि उनको ये दिखता है कि मतलब जरूरी नहीं है कि कोई अगर काम कर रहा है तो सातों दिन उसका एकदम सैलरी जॉब ही है, राइट? सो देयर कैन बी वेरियस काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स.
So that's why to incorporate all that, they have these various ways to elicit answers. But things are all the time, like always things will be self-reported, है ना? तो कई बार वर्कर्स ऐसे होते हैं कि अगर बहुत दिन से अनएम्प्लॉयड है तो वो ऐसा बोलेंगे कि हमने तो देखना ही बंद कर दिया. लाइक सो सपोज देयर इज अ फैमिली इन विच देयर आर से 3 सिबलिंग्स. तो उनमें से अगर 2 काम कर रहे हैं और तीसरे को नौकरी नहीं मिल रही है, राइट, तो घर चल रहा है ना? तो घर सपोज उसकी ही कमाई पे डिपेंडेंट नहीं है. सो देन दिस पर्सन माइट से कि नो आई स्टॉप लुकिंग फॉर जॉब. मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, बट नहीं मिला है तो ठीक है, आई टेक केयर ऑफ द हाउस एंड आई डू अदर थिंग्स एंड सो. So these are called discouraged workers. Not exactly in the labor force technically because they say that they are not looking for work, but not exactly out of the labor force because they say कि अगर मिल जाए नौकरी तो कर लेंगे. ठीक है. So इस टाइप का, क्योंकि हम we are ultimately dealing with people, we have to draw, like there will be these kind of gray areas. हमको कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो discouraged workers not part of the labor force, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो कि काम दिया जाएगा तो कर लेंगे. ठीक है. And because of this, right, so because you look at unemployment rate, तो unemployment rate का डिनोमिनेटर क्या है? लेबर फोर्स. अब डिस्करेज्ड वर्कर्स को तुमने लेबर फोर्स से बाहर कर दिया. ठीक है. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने आप इन्फ्लेट हो जाएगी, राइट. एंड अगर तुमने इसको लेबर फोर्स के अंदर ले लिया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अपने आप कम हो जाएगी. सो देन अ लॉट ऑफ टाइम्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे जो पॉलिसी मेकर्स का इतना फोकस रहता है, sometimes people like to focus on what is called the employment rate, right? So employment rate is the ratio of, this is a ratio of people who are employed, but the denominator is not the labor force. ये देखो, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट में डिनोमिनेटर लेबर फोर्स था ना, तो जो लोग भी लेबर फोर्स में है उसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिसाइड होता है. तो लेबर फोर्स का डेफिनेशन ही काफी फ्लूइड है, राइट. बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिफाइन किया जाता है एज एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन अवेलेबल फॉर वर्क. तो ये वाले जो, right, so population available for work. So this is a much more stable category, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एज से डिफाइंड होता है, राइट. एंड say like if you're not a convict and you're not an underage in the simplest sense, then you are in the population that is available for work. So it's a much more steady pool, and then you can define an employment rate like that. Okay, so employment rate is not equal to 1 minus unemployment rate. It is this. Okay. Okay. So these are some basic definitions. If we are clear on that, then we can go ahead. In case of unemployment rate, पूरी बात बोलो. ये क्या व्हाट्सएप जैसे इतना इतना मैसेज कर रहे हो? अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स, यस. डिनोमिनेटर का फर्क है दोनों में. ओके. नाउ ये सब definitions के बाद let us now move to this, like looking at what do we mean by equilibrium. कैसे equilibrium में जाते हैं लेबर मार्केट. ठीक है. तो अभी हमारा एनालिसिस जो हम करते आ रहे हैं माइक्रो में उससे फर्क होगा, एंड दिस इज व्हाट यू विल नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली इन मैक्रो. ठीक. सो लेट्स स्टार्ट विथ वेज डिटर्मिनेशन. ठीक है. सो वी आर ट्राइंग टू डू व्हाट, वी आर ट्राइंग टू सी के वेजेस लेबर मार्केट में कैसे डिटर्मिन होते हैं. वी विल गो फ्रॉम ऑब्जर्विंग के माइक्रो लेवल पे लोग कैसे बिहेव करते हैं, राइट. कैसे वेजेस डिटरमिन होते हैं, किसी की नौकरी लगी तो कैसे डिटरमिन हुआ, और देन वी विल सी के एग्रीगेट में हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है. देन वी विल सी कि इक्विलिब्रियम में कैसा होता है. कूल.
सो वेज डिटर्मिनेशन के लिए हमको पहले ये समझना है कि हाउ आर वेजेस एक्चुअली डिटर्मिन्ड। सो कैन यू थिंक कैसे, जैसे सपोज तुम्हारी नौकरी लगती है तो तुम्हारा जो सैलरी होगा वो कैसे डिटर्मिन होगा? अपना सोच के लिखना, मैं आंसर नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, based on skill set a person has to offer skills, okay, uh, based on skill, okay, एक फैक्टर हो गया, ठीक है, करेक्ट। आई एम मोर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म इस पे डिपेंड करेगा, राइट। सो स्किल विल बी एन इम्पॉर्टेंट, सप्लाई एंड डिमांड, यस, अगेन समथिंग दैट विल डिटरमिन द मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है, all of them are correct answers, just I was just trying to drive you in a little different direction, but ठीक है, not wrong, but हम उस पे आएंगे because they are factors that affect the way in which wages are determined, right? So wage determination, suppose के कोई भी जॉब है, उसमें किस किस टाइप से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो है वो वेज नेगोशिएट होता है। एक किस्म का वेज हो सकता है, एक किस्म का ऑफर हो सकता है, टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट जैसी चीजें होती हैं, जैसे कि तुम अगर जा रहे हो क्या बोलते हैं, जैसे यूएस वगैरह में इट्स वेरी कॉमन, अगर तुम मैकडी में या सीसीडी में या कोई भी स्टारबक्स वगैरह में अगर तुम एक पार्ट टाइम के लिए जा रहे हो, यूर स्कूल गोइंग पर्सन एंड यू जस्ट वांट सम, यू वांट टू अर्न इनकम, राइट। सो ये उस टाइप के जॉब्स हैं जहाँ पे टेक इट और लीव इट है, मतलब कि ऑलरेडी बताया गया है कि इतने पैसे मिलेंगे आवरली बेसिस पे, लेना लो, नहीं लेना जाओ। इंडिया में ऐसे एग्जांपल्स कहाँ मिलेंगे, जैसे तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ, ठीक है, ऑल दीज काइंड ऑफ मैनुअल वर्क्स, यू गो टू अ कंस्ट्रक्शन साइट, यू गो टू लाइक आई डोंट नो, पुष्पा में जैसे वो लोग को नौकरी देते थे ना। सो हाउ वाज दैट, देयर केम अ ट्रक, राइट, एंड दे सेड दैट दिस इज द डेली वेज rate, right? So if it's like those who want to earn 500, they get on this, those who want to earn 1000, they get on this, all examples of take it or leave it, right? So sometimes wage setting happens like this, take it या leave it। दूसरे काइंड ऑफ में होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग हो सकती है, राइट। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब यूजुअली कहीं ना कहीं वी आर टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ अ यूनियन, ठीक। सो जैसे मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स में, जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में बहुत होता था ये, कि देयर यूज्ड टू बी अ वेरी कनिंग कैपिटलिस्ट बॉस एंड देयर यूज्ड टू बी अ वेरी पीड़ित union of workers working in the factories, right? So then the bargaining or the wage setting used to happen कि कैसे ये लोग बार्गेन करते हैं, है ना। तो फिर ये यूनियन वाले स्ट्राइक पे चले जाएंगे या फिर फर्म्स मालिक बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं, हम देंगे, है ना। तो डिपेंड करता है कि किसके पास कितना बार्गेनिंग पावर है, उस हिसाब से। तो एक और तरीका होता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूजुअली होता था, आजकल उधर भी कम हो गया है, is that you bargain collectively as workers, right? You can also be a group of firms, ऐसा भी हो सकता है, theoretically possible, sometimes it has been the case। So the bargaining happens at a collective level। और तीसरा जो हम बोलेंगे individual level bargaining, right? So individual level bargaining will usually happen in jobs like, जैसे कि तुम ऑलरेडी किसी जॉब में इन्वॉल्व हो और फिर तुम जा रहे हो किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने, कहीं ना कहीं तुम बार्गेन करते हो, है ना। यू आर एबल टू डू दैट, यू आर एबल टू टेल देम कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वाज गेटिंग इन द प्रीवियस कंपनी, इतना तो मेरे को चाहिए, ठीक है। सो बार्गेनिंग पैसे के लिए, बार्गेनिंग पोजीशन के लिए, बार्गेनिंग पर्क्स के लिए, ऑल ऑफ दैट वी आर इंक्लूडिंग इन बार्गेनिंग फॉर वेजेस राइट नाउ। एंड इंडिविजुअल लेवल बार्गेनिंग पे तुम वन ऑन वन फर्म के साथ नेगोशिएट करते हो, right? So then what you will observe is that in this order
the bargaining power that a particular worker has is increasing, right? So increasing worker bargaining power, right? एंड ये जो इंक्रीजिंग वर्कर बार्गेनिंग पावर है, ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? ये पहला तो चीज डिपेंड कर रहा है, यू विल सी दैट दिस इज ऑल्सो द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ स्किल सेट दैट अ जॉब रिक्वायर्स यूजुअली, है ना? ये कंस्ट्रक्शन वर्कर पे ऐसा काम क्यों चलता है? क्योंकि तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, तुम्हें लेना ले, नहीं तो अपना काम अपना देखो जैसा। कलेक्टिव बार्गेनिंग कब होगा? जब तुम्हारे इंडिविजुअल क्लाउड इतना नहीं है, जब तुम्हें एज अ ग्रुप बात करनी पड़े, है ना? तुम्हारा काम इतना भी फालतू नहीं है, या एक फालतू इज, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, यू कैन से दैट इतना भी रूटीन नहीं है, या इतना ही I don't also want to use the word unskilled, although that is the official term that is used. It is like that there are not so many people that are just readily available to do it. Your job requires some level of training, some level of upskilling, right, in that particular profile. और इसीलिए तुम्हारे पास कुछ पावर है, बट तुम्हारे पास इंडिविजुअली पावर नहीं है. As a group, you do have a bargaining power. So this is also the direction of increasing skill required, not your skill, skill required for the job. ठीक है, ये बात समझना. अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्किल है, लेकिन तुम जाके इफ यू हैव टू वर्क इन अ कंस्ट्रक्शन साइट, तो तुम्हारी स्किल की कोई वैल्यू नहीं है ना? सो इट इज द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, दैट इज इंपॉर्टेंट. और ये फिर से बार्गेनिंग पावर दूसरी किस चीज पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन, एज ये कौन बोला? अंशुल. सप्लाई एंड डिमांड, मतलब मार्केट का क्या सिचुएशन है. सो इट इज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट, है ना? जितने ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग रहेंगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी बार्गेनिंग कम रहेगी, है ना? अगर जैसे कि तुम यू गो टू अ कंस्ट्रक्शन साइट इन से यूरोप, you will not find this kind of a take it or leave it thing, because in that market in Europe there are not people who are like उतना pool of workers और pool of unemployed workers नहीं है. हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ सिचुएशन है ना? इंक्रीजिंग, अगर बार्गेनिंग पावर और भी किससे डिटरमिन होती है? जबकि तुम्हारा काम करने के लिए लोग कम है ना? सो विद इन द सेम काइंड ऑफ बार्गेनिंग यू कैन ऑल्सो सी दैट किसी भी वर्कर की बार्गेनिंग पावर घटती रहेगी इफ द लेबर मार्केट इज बैड. ऐसे ही बोलते हैं ना कि अभी बिल्कुल ही जॉब मार्केट की बहुत बुरी हालत है. उसका क्या मतलब है? कि इस जॉब मार्केट में नौकरी नहीं मिलेगी. अगर तुम यहाँ छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास दूसरी नौकरी आने नहीं वाली है, राइट? सो देन यू वांट टू स्टिक टू योर जॉब. इवन इफ यू वांट टू गेट अ जॉब, तुम्हारे पास बार्गेनिंग पावर कम होगी. सो दिस इज इंक्रीजिंग unemployment levels. ऑलराइट. सो मोटा मोटा ऐसे बार्गेनिंग होता है. हमको दिखता है कि मतलब वेज सेटिंग ऐसा होता है, कहीं ना कहीं एक there's some degree of bargaining or negotiation that happens between employer and employee, and this in turn depends on के supply demand का कैसा situation है, unemployment कितना है, और दूसरा कि जॉब जो कर रहे हैं उस जॉब में क्या स्किल रिक्वायर्ड है. स्किल रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ लोगों के पास क्या स्किल है. ठीक है. सो अगर ऐसा स्किल रिक्वायर्ड है जो बहुत कम लोगों के पास है, देन अगेन यू आर इन अ, द वर्कर इज इन अ हायर बार्गेनिंग पोजिशन. ठीक है. सो देन व्हाट वी डू ऑब्जर्व इज दैट हर कंट्री में अलग अलग नॉर्म्स हैं, है ना? जैसे कि यूरोप में अभी भी कलेक्टिव बार्गेनिंग काफी रहती है, यूएस में कलेक्टिव बार्गेनिंग इज मच लेस, इंडिया में भी टेक इट और लीव इट टाइप के जॉब्स अभी बहुत बढ़ चुके हैं, है ना? तो डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट टाइम पीरियड्स, बट देर आर टू कॉमन ट्रेंड्स इन ऑल द काइंड ऑफ, लाइक अब हमको इतना ही अगर इतना ही डिफरेंट है सिनारियो बाकी सब कंट्रीज में, then how do we come up with a unified theory?
So for that, we have observed that there are two common trends in whichever way the job, the wage is set. ये दो common trends क्या है? पहला है कि usually you will see that wages are higher than the reservation wages. What are reservation wages? Reservation wages होते हैं the minimum, नहीं, minimum wage what? Limit set, नहीं, no. Limit set by government is called the minimum wage. ठीक है, लेकिन reservation wage is worker specific. Reservation wage is that wage for a given worker at which the worker is indifferent between taking the job or not taking the job. ठीक है, reservation wage ready to work भी नहीं, indifferent between working and not working. राइट, ये वो मार्जिनल डिसीजन वाली बात है. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग एंड नॉट वर्किंग, बट इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि सपोज यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, राइट, एंड यू हैव टू ऑफर्स. एक ऑफर में ज्यादा सैलरी ऑफर हो रही है. इन वन ऑफ द ऑफर्स कंपनी ए इज रेडी टू पे यू अ हायर सैलरी. सो देन with respect to company B, your reservation wage becomes that, the higher salary, है ना. अगर कंपनी बी तुम्हें हायर सैलरी के इक्वल देती है तो तब तो तुम इंडिफरेंट हो जाओगे वर्किंग बिटवीन कंपनी ए एंड कंपनी बी. देन अदर फैक्टर्स विल डिसाइड कि लोकेशन, या सपोज बाकी सारे फैक्टर्स सेम है, एकदम बगल बगल बिल्डिंग है इनकी, दोनों के दोनों कंपनी का ओरिजिन सेम है, काम सेम है, जो भी तुम सोच सकते हो, बट द डिफरेंस इज दैट दे आर पेइंग डिफरेंट वेजेस. So if firm A is paying you a higher wage, then you will be indifferent between working in firm A or firm B if firm B also gives you the same wage. Firm B अगर कम दे रही थी तो तुम firm B के perspective से सोचोगे तो A वाला wage is your reservation wage. ठीक है, but over here we are talking about working or not working. So तब ये है कि डिपेंड करता है कि तुम्हारी मतलब क्या, जैसे कि सेविंग है तुम्हारी, अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम फिर क्या करोगे, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम क्या है. हम्म? तो दैट बिकम्स रिजर्वेशन वेज. इसको कैसे इफेक्ट किया जा सकता है, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. सपोज किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स तुम्हारा रेजर्वेशन वेज बढ़ा देंगे. अगर तुम काम नहीं भी कर रहे हो तो भी तो कुछ ना, तुम्हारा काम चल रहा है, तुम भूखे नहीं मर जाओगे, right? So then you will not be willing to accept a job for a very low wage. तुम्हारा जो एक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एक्सेप्टिंग अ जॉब होगा वो बढ़ जाए, राइट. सो रेजर्वेशन वेज इज wage at which a worker is indifferent between working and not working, and this we are not saying that working in firm A as opposed to firm B. We are saying कि नौकरी या नो नौकरी, नौकरी या बेरोजगारी, उसके बीच में जो तुम्हें वेज रेट इंडिफरेंट कर दे, दैट इज योर रेजर्वेशन वेज. ठीक है, ओके, ऑलराइट. सो नाउ वी आर सेइंग दैट यूजुअली जो है ये दो चीजें देखी गई हैं कि जो भी रेजर्वेशन वेज है, अब माइक्रो थ्योरी क्या कहती है, माइक्रो थ्योरी कहती है कि पे एनीवन इक्वल टू द रेजर्वेशन वेज, जिस पे भी वो इंडिफरेंट हो जाए, मार्जिनल डिसीजन लेना है ना. वी हैव नॉट डन, मतलब सिलेबस में है नहीं तो हम ये करते नहीं है डिटेल में, but according to marginal theory you pay anyone their reservation wage, right? You make them indifferent. If you pay them higher,
तो तुम वो वेज को थोड़ा कम कर सकते हो, वो तुम्हारे साथ फिर भी रहेगा, है ना। तुम थोड़ा और कम कर सकते हो, दैट पर्सन विल स्टिल बी विथ यू। Till when can you reduce it? Till it is equal to reservation wage. And then we assume that if the reservation wage is paid, the worker actually chooses to work and not stay unemployed, right? But in reality, it is observed कि जो भी minimum wage पे लोग indifferent होते हैं, usually wages उससे ज़्यादा होती हैं, actual wages, right? First point of observation is this, that wages are higher than द एवरेज रिजर्वेशन वेजेस जो रहती है लोगों की। और दूसरी ये कि वेजेस डिपेंड ऑन लेबर मार्केट कंडीशन। जब लेबर मार्केट अच्छा है तो वेजेस बढ़ जाती है, खराब है तो घट जाती है। सो देन दिस इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग, लाइक देयर आर टू लाइन्स ऑफ explanation for this. Let's see that. So this is explained using two arguments. The first argument is bargaining, जो हमने ऊपर बात की कि कितना टाइम हो गया, 3:34। I've only booked a class till 4 today, so remind me at 3:55, ठीक है, then I will stop. So the first is that the way bargaining happens, है ना। bargaining इस तरीके से होती है कि that results in wages being set higher than the reservation wage, and that also results in wage depending on labor market conditions. So हमने ऊपर ऑलरेडी बात की हुई है उसके बारे में। So बार्गेनिंग जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? बार्गेनिंग विल डिपेंड ऑन कि दोनों के पास हाथ में क्या पत्ते हैं, है ना। दो पार्टीज हमारे पास, जिसको नौकरी चाहिए और जिसको नौकरी देनी है। डिपेंड करता है कि दोनों के हाथों में कितना बार्गेनिंग पावर है, क्या कार्ड्स हैं, है ना। वर्कर के फेवर में क्या काम करता है? वर्कर के फेवर में काम करता है कि जॉब की स्किल रिक्वायरमेंट क्या है। The better the skill requirement, like if the worker also has that, right, worker will have more bargaining power. और दूसरी चीज क्या काम करती है कि अगर जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं इधर उधर, फॉर एम्प्लॉयर साइड, इफ द जॉब प्रोस्पेक्ट्स आर बैड, इधर उधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, तो तुम्हारे लिए बढ़िया है ना। इसके पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं है और तुम यही गया तो कोई दूसरा मिल जाएगा। और अगर जॉब की स्किल रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, अगेन यू विल नॉट हैव टू पे अ हायर वेज, right? So bargaining will again depend on the nature of job, or the skill level, and the other thing is that labor market condition. Right? So if the job is काफी skill required है, तो it is very likely, जैसे मान लो कि दोनों चीज है, स्किल रिक्वायर्ड है और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम है, तो तब इट इज वेरी लाइकली के जो वेजेस हैं वो रिजर्वेशन वेजेस के ऊपर सेट हो, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, उल्टा है, सो देन still you, like, the wages will depend on the kind of situation in the labor market. And even then, even if the labor market condition is bad, even if the skill level that is required is low, तब भी usually the firms will be willing to pay a reservation wage higher than willing to pay a wage higher than the reservation wage, जिसको बोलते हैं efficiency wages. Okay, efficiency wage है कि no matter the bargaining power with the workers, right?
firms will still be willing to pay higher wages, right? मतलब वो खुद ही चाहते हैं, they want to pay wages higher than reservation wages. Why do you think that could be? Usually बोल रही हूँ मैं, है ना? ऑल्सो इफ यू आर थिंकिंग कि हमारे यहाँ तो बहुत सस्ते में ही काम करा लेते हैं, रेजर्वेशन वेज भी नहीं देते हैं, तो ऐसे सोचो कि सपोज यू ऑब्जर्व, राइट, फर्म्स नीड स्किल्ड वर्कर. yes, yes, I will just rephrase it, but I like to think is कि मान लो कि कभी you observe कि firms pay higher wages, right? तो क्या रीजन हो सकता है? वन इज दैट फर्म्स नीड स्किल वर्कर. अ बेटर वे टू पुट इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज दैट work is like to keep them from joining other firms. Yes, 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 right. Another good reason. So idea ये है कि कोई भी जॉब में अगर जॉब ऐसा है जिसमें थोड़ा भी लर्निंग कर्व इन्वॉल्व है ना, ऐसा नहीं है कि आए और करके चले गए, जिसमें थोड़ा भी लर्निंग वर्क इन्वॉल्व है, उसके लिए यू विल नीड टू रिटेन वर्कर्स सो दैट वो सीख सके. और उनके लर्निंग में अगर कॉस्ट इन्वॉल्व है, किसी को ट्रेन करने में अगर टाइम कॉस्ट इन्वॉल्व है, एक्चुअल टेंजिबल कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो तुम किसी वर्कर में जब इन्वेस्ट करते हो तो तुम चाहते हो कि वो वर्कर रुके, है ना? और उसको रोकने के लिए तुम्हें ये भी चाहिए कि वो मतलब उसको थोड़ा पैसा भी अच्छा मिले, राइट? So then you want to retain workers, so you want to you may want to pay higher wages if you want to retain workers, right? If you want to keep them satisfied, right? And we need skilled labor is not exactly a correct statement. What I'm saying that we need to skill the labor. लेबर कितना भी स्किल्ड हो, कोई भी तुम जॉब, जैसे तुमने अगर मान लो कि when you qualify for whatever exams that you're sitting for, of course if you have qualified you are skilled, ठीक है? लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमेशा ही दी जाएगी, क्योंकि जो भी पर्टिकुलर जॉब में जाओगे उस जॉब को करने का कुछ एक अपना तरीका होगा, कुछ एक उसके स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक स्किल्स होंगे, राइट? सो देन the payment has to be such that it incentivizes you to stay, right? That is why, so you want to keep the workers satisfied, you want to retain workers for, job training, or you don't want कि इतना high turnover rate हो. उसके अलावा तुम efficiency बढ़ाने के लिए भी लोगों को pay करते हो, right? Because if workers are, happy और ये सारी चीजें, efficiency wage theory बहुत बड़ी लंबी चौड़ी theory है, उसमें ये सभी बात बताया जाता है, बट मोटा मोटा बात ये है कि you want retention because you need to train people, and you also want the workers to be satisfied and be better, be more productive, right? So you will realize कि ये सारी जो वेज को लेकर थ्योरी है या ये जो लेबर के ऊपर पर्सपेक्टिव है, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट क्लासिकल सेड. क्लासिकल्स के लिए लेबर एक होमोजेनस ग्रुप था, जिनको सिर्फ जो है एक मतलब बेस, मतलब उनका वेज वाज ऑलवेज इक्वल टू देयर मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट? एंड द वे दैट एम्प्लॉयमेंट वाज हैपनिंग, द वे इन विच वेज वाज सेट, रिमेंबर ऑक्शनिंग हम कहते थे, है ना? कि हर बार जो तुम जा रहे हो और एक ऑक्शन हो रहा है, एंड देन यू आर सीइंग दैट मतलब ये मार्केट प्राइस सेट हो गई है, इस पे कौन कौन काम करना चाहता है. कम लोग काम करना चाहते हैं तो तुमने मार्केट प्राइस और बढ़ा दिया तो और लोग काम करना चाहेंगे. मतलब इट वाज एन ऑक्शन सॉर्ट ऑफ सेटिंग विच वाज more true of the kind of way in which production used to happen in that time. फिर जैसे जैसे इवॉल्व हुए चीजें, जैसे जैसे ऑफिस कल्चर बढ़ा, जैसे जैसे इस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग कल्चर बढ़ा, तब तुम्हें दिखता है कि तब लोगों को रियलाइज हुआ कि अच्छा ऐसे भी काम होता है, ऐसे भी लेबर मार्केट चलता है. और जब ऐसे चलता है तो ऐसे चलने के लिए फिर तुम्हें थ्योरी देखनी पड़ेगी. तब तुम्हें देखना पड़ेगा कि वेजेस जो है वो क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई वाई आरंट
Why isn't the labor market clearing? मतलब वेजेस रिजर्वेशन वेजेस के इक्वल क्यों नहीं है? वेजेस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्यों है? वेजेस रिजर्वेशन वेजेस से हायर क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें भी चलती हैं अंदर, राइट? सो यू विल सी द एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी आल्सो, बिकॉज द वर्ल्ड इटसेल्फ इज इवॉल्विंग. अभी क्लासिकल्स चाहते कि ये थ्योरी दे पाते तो नहीं दे पाते ना, वहां पे कभी कोई ऐसे काम ही नहीं करता था, इस टाइप का वर्क कल्चर था ही नहीं. All right. So then, what you will finally observe is that efficiency wages will also depend on those two things. Right? So again, you will have nature of job and you will have labor market condition. Okay. So now what we will do is we will combine the two and we will come up with the way in which wage is set, right? Let me just write it and then I will give you the, not the caveat, but something that you should notice. So what we are saying over here, that aggregate nominal wage. It can be written as a function of, so W, which is the aggregate nominal wage. ये जो W है, this can be written like this. PE, I'll just tell you what it is. So this is U, comma, Z. This is the nominal wage. This is the expected price level. ये F is the functional form, ठीक है? This is the unemployment rate. And this is what is called a catch-all variable, which I will explain. And this is negative, this is positive, which basically means, so negative implies that del W by del U is less than 0. And positive implies that del W by del Z is greater than 0. Written? लिख लो पहले, and I will explain. Give me a thumbs up when you're written. Okay. ठीक है, चले? All right. What this is saying, first of all, पहली बात ये है कि ये जो इक्वेशन है, this is not from this, we are not saying that it is from the labor side, worker side, or it is from the firm side. This equation is not saying that. ठीक है, ये कोई वेज डिमांड की इक्वेशन नहीं है, ये कोई वेज की विलिंगनेस टू पे की इक्वेशन नहीं है. ये इक्वेशन है कि लेबर मार्केट में मैक्रो लेवल पे ऐसे बार्गेनिंग होती है
कि जो वेज होता है वो नेगेटिवली रिलेटेड होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट से, पॉजिटिवली रिलेटेड होता है कुछ और वेरिएबल से जिसकी बात हम करेंगे। सो द एंड पॉजिटिवली रिलेटेड होता है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे, राइट? This is not saying that this is how much wages workers demand. This is not saying that this is how much wages firms are willing to supply. This is saying wage कैसे determine होता है by the interaction of workers and firms in the labor market. ये जो हमने पूरा डिस्कशन किया है वहां पे हमने ये नहीं कहा था कि सिर्फ वर्कर साइड का पीओवी है या फर्म साइड का पीओवी है, जो हम यूजुअली करते हैं माइक्रो में, जो हम करते थे, है ना, या फिर जो हमने क्लासिकल में किया। क्लासिकल में क्या था कि ये है लेबर सप्लाई फंक्शन, इस वेज पे लेबर इतना लेबर सप्लाई करना चाहेंगे, इस वेज पे फर्म्स इतना डिमांड करना चाहेंगे। डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग है वो, ये डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग है। ये है कि हमने अलाउ किया है कि लेबर मार्केट में बहुत सारे तरीकों से बार्गेनिंग और एफिशिएंसी वेजेस की वजह से वेज सेटिंग हो सकता है। We are not pinning down any particular method. We are not pinning down any, sort of मार्केट एफिशिएंसी कि नहीं भाई, मतलब जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के इक्वल ही उनका वेज सेट होगा, नहीं होगा, होता भी नहीं है ना। बार्गेनिंग पावर जो है वो कई बार बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट भी होती है, क्योंकि फर्म्स जो है उनके पास मार्केट पावर होती है, ठीक है। सो देन जिस भी तरीके से वेजेस सेट होते हैं उसमें दो फीचर्स होते हैं। पहला फीचर ये कि जो वेजेस सेट होते हैं वो वेजेस जो मार्केट में चलते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं, राइट। दूसरा फीचर ये होता है कि कुछ और वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, उसके साथ वो पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं, राइट। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ेगा तो जिस वेज रेट लेबर मार्केट में चलेगी वो अपने आप ऊपर चली जाएगी, ठीक है, नॉमिनल वेज। और द थर्ड थिंग इज कि प्राइस लेवल जो है उसके ऊपर पॉजिटिवली डिपेंड करेगी। नाउ प्राइस के ऊपर क्यों डिपेंड करेगी, लेट्स टेक ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स इंडिविजुअली। ऑलराइट, सो देन फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज ऑन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, राइट। पहली बात तो प्राइस लेवल पे क्यों डिपेंड करेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स पीपल केयर अबाउट रियल वेजेस, राइट। सो अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो नॉमिनल वेज है वो भी ऊपर जाएगी। अगर इस टाइप का जो भी बार्गेनिंग से हो, चाहे कलेक्टिव हो, चाहे इंडिविजुअल हो, जिस भी तरीके से वेज सेट होती है प्राइस के साथ साथ वेजेस बढ़ते हैं, ठीक। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, बोथ योर फर्म्स एज वेल एज योर वर्कर्स केयर अबाउट द रियल वेजेस, ठीक। प्राइस लेवल पे तो होगा ही, बट एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे क्यों होगा, ये सवाल है। व्हाई नॉट द करंट प्राइस लेवल? Price level, we are clear that both parties care about real wages. But why do we say that expected price level पे depend करेगा? Expected because जो आज तुम्हारी सैलरी सेट होती है वो एटलीस्ट एक साल के लिए तो सेट रहती ही है, और अगर अप्रेजल नहीं मिला तो वो और लंबे समय के लिए भी सेट हो जाती है। नॉमिनल वेज में एक रिजिडिटी होती है विच इज समटाइम्स बिल्ट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कब ऐसा होता है, वो जो क्लासिकल वाला सिस्टम था, आजकल वैसा बहुत कम होता है। या फिर अगर तुम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ही देखो, हर दिन थोड़ी रेट चेंज होता है, एक फिक्स हो जाता है, मे बी लीन पीरियड में सीजनल ट्रेंड्स के हिसाब से ये रेट चेंज हो, जैसे कि नॉट फ्रॉम करंट प्राइस बट ऑन वर्कर्स एक्सपेक्ट अदर फीचर्स, यस, ठीक है। सो इट इज ट्रू दैट this is one point, that it is about what they expect about the future. The other point is that wage also does not change that frequently. So wage is also set for a sort of longish period of time, right? So because of both these reasons, आज अगर तुम्हारा वेज सेट हो रहा है तो वो एटलीस्ट एक साल डेढ़ साल तक उतना ही रहेगा।
सो देन यू हैव टू थिंक अबाउट के फ्यूचर में क्या प्राइस रहा है। अगर कोई फर्म ऐसा है जिसको लग रहा है कि भाई उसका प्रोडक्ट बिल्कुल ही धमाकेदार होने वाला है, उसका मार्केट बहुत खुल जाने वाला है, दैट फर्म विल ऑल्सो सेट वेजेस हायर, नॉमिनल वेजेस हायर देगा वो फर्म, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस हायर हो, राइट। सो देन इट इज ऑल बिकॉज दिस फीचर, पीई वाला फीचर ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द फैक्ट कि नॉमिनल वेजेस रिजिड होते हैं, हर दिन चेंज नहीं होते हैं, जैसे क्लासिकल्स कहते थे कि आज हुआ तो कल फिर किसी और रेट पे वो हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, 1 साल, 1.5 साल, 3 साल, 3 साल का भी बॉन्ड होता है, तो वो चीजें नहीं चेंज होती हैं, राइट। सो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, बिकॉज nominal wage contracts may be fixed for long periods of time, right? 1 year, etc. Okay, so we have to work on expected price level. The second thing is unemployment rate, वो तो हमको पता ही है. Wage depends on unemployment rate and it depends on it inversely. And the third thing was the Z variable, which is basically what is called a catch-all variable. ये वो सारी चीजें कैप्चर करता है, एक्सोजेनस है ना, ये एक एक्सोजेनस वेरिएबल है इस इक्वेशन, एंड दिस कैप्चर्स एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू पॉजिटिवली अफेक्ट द wages, राइट, एट एनी गिवन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो मतलब जिस तरीके, जैसे मैंने वो बोला, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हो गया, देन यू हैव सपोज एम्प्लॉय प्रोटेक्शन प्रोग्राम हो गया कुछ, कोई मिनिमम वेज, लाडली बहना, कैसे? It is 355. I'll stop here. So then what these things are going to do is that if they will basically increase your reservation wage, है ना। तो जब तुम्हारा reservation wage बढ़ेगा तो जो actual wage होगा market में वो भी अपने आप ऊपर पुश हो जाएगा, ठीक है। So I'll stop over here. Meanwhile, Anshul, please explain why you said this. Also, just to repeat, this is not, we are not doing it from the point of view of demand and supply in the labor market. डिमांड और सप्लाई ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। हम अब उससे भी हेलीकॉप्टर व्यू ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो भी तरीके से वेज डिटरमिन हो रहा है लेबर मार्केट में, फॉर आवर पर्पसेस वी आर ओनली कंसर्न कि वो प्राइस पे कैसे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे, और वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे कैसे डिपेंड करता है। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सकता है, वी हैव आल्सो अलाउड दैट। So you will see that even the functional form has not been specified, right? So the functional form is also arbitrary. The only thing that we need to take care of is that this is negative and this is positive. That's all. All right. So we'll continue from here. Now we will go to the price determination equation. अच्छा, okay, that ways. हाँ ठीक है, that is a kind of unemployment benefit. Yeah, correct, correct. All right. So then we will move to price determination, और अब हम ये देखेंगे कि equilibrium का यहाँ पे क्या मतलब है, right? So let's stop here. We'll continue on Tuesday, and if you do finish your backlogs, तो जो भी free रहना, like try and attend. It's so much better taking a class like this, yeah. We'll do a sort of monthly or bi-monthly thing.
and I will also arrange a meetup. Okay, cool. I hope it was clear, guys. And मिलते हैं ट्यूसडे को. ठीक है, चलो, थैंक यू. Equal to men. What? Oh, acha. Thank you, guys. Yeah. Bye bye.